वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान में इस वक्त बिजनेस फोरम से खिताब कर रहे हैं। For the people of Pakistan, I always try to match his commitment, but of course he is ahead of me in this field, and that is the foundation of this wonderful and beautiful relationship. Today we have achieved another milestone. We had wonderful one-on-one meeting today, and then delegation level meeting. We discussed everything under the sun. Well, there is no sun under the roof, and of course agreed on a very clear-cut way forward. And I am very happy to disclose this in this August Assembly of prominent brothers and sisters from both Pakistan and Azerbaijan, that we are going to enhance our bilateral trade, which is just $14 million, and hardly reflects the strength of our relationship, to $2 billion as soon as we can. And this is not just a rhetoric. I can mention here that basmati rice from Pakistan, its import duty has been very generously exempted by my dear brother, and this is how we can really move forward. Certain item from Azerbaijan, Minister of Commerce sitting here, and Deputy Prime Minister from Pakistan, we must focus on those areas where we can lower these tariffs so that our import and export can really enhance and increase. Of course, LNG is another trading commodity which can be added into our trading pool. I won't discuss defense equipment. Of course, JF-17 jet fighters is another high-ticket item which Pakistan and Azerbaijan are very actively pursuing. And I can say without any fear of contradiction, ladies and gentlemen, my dear brothers and sisters, that if we really put our act together, we can achieve $2 billion worth trade between our two great countries. Next, and which is a very good news which has just been disclosed, once again told by my dear brother, President Ilham Aliyev, that we've agreed today that this $2 billion investment announcement, which he very kindly made during his last visit to Pakistan, his second home, and my second home, Azerbaijan. We have today agreed that a lot of work has been done by both the teams. Great work, and I really commend their hard efforts and deeply appreciate. But whatever small little gaps are there, we have fixed 1 month to crystallize everything, and in April I will be, and we will be rather, receiving our brother in Islamabad again to sign these agreements for $2 billion investment in Pakistan. For this, I must say, my brother, I'm extremely deeply appreciate your gesture. And of course, this is going to be a mutually beneficial arrangement. Both countries will benefit, but to make this commitment is a great gesture, and we must remember this a wonderful contribution from your side, and we will remember for all times to come. I must thank Azerbaijan's team, wonderful team sitting here, and great Pakistani team
sitting here, and I think this is how, in the waters of Arabian Sea, is meeting with waters of Caspian Sea. This love and affection, this vigor, this enormous energy and synergy is going to really transform our great fraternal relations into unprecedented trade and investment portfolios and commitments. One thing which, Excellency, you have mentioned and mentioned rightly so, is the lack of information between the two business communities. What Azerbaijan has to offer to Pakistan in real terms, and what Pakistan has to offer to our Azerbaijani business community. Tariffs, our strength in agriculture, industry, IT, and so on and so forth. So today I want to announce, with your permission, that we will constitute a permanent information bureau, comprising of both the countries, which will have the most modern gadgetries, equipped with IT and of course also AI, and relaying real-time information in both ways. And this will be extremely helpful. I think this mechanism should be put in place from our side, Jam Kamal Saab, and of course our other honorable members of the team, and of course whosoever you, my brother, appoint from your team. And this team should then work out a very robust mechanism so that we can, this alone will step up our efforts in a very big way. Secondly, our defense cooperation is there already from ages, but I think now is the time to look into, discuss and decide to have joint defense manufacturing facility shared between Pakistan and Azerbaijan. And I think when this delegation will be visiting Pakistan in April, I think this will be one of the main items of agenda for discussion over there. And when you would be visiting Pakistan, my brother, we can also ink this part of our vision into reality in April, inshallah, this year. And then, of course, North-South corridor. Unless we have efficient, reliable, and cost-effective transportation system, connectivity, I don't think we will be able to achieve our targets in times to come. And I think for that we had very good discussion today during our bilateral meeting discussion, and we will be fully supporting your vision in this behalf. And I can assure you that Gwadar Port can play a very pivotal role for promoting our trade inwards and outwards. And I think let us focus on this, and I think this will be a game changer. And I want to assure you, my dear brother, that I'll work very closely with you on this very important project. I am very happy to announce that Azerbaijan Chamber of Commerce has been established in Islamabad, and its offshoots in Lahore and Gujranwala, which will really facilitate our bilateral trade. And I think this is what we should also be doing, having Pakistan Chamber of Commerce here in Baku and its satellites in other important cities here in Azerbaijan, so that these chambers can really in real time collect information, exchange this information and pass it on to potential
traders and investors, which will be very, very helpful. I will not take more time, my dear brother. Once again, I would like to thank you very much for your great commitment towards our friendship between the two countries, and I want to say this in all humility, but with total certainty at my command, that I will try to match your fervor, your commitment to really strengthen these relations in times to come. Trilateral, understanding between Azerbaijan, Turkey, and Pakistan should be quadrupled, and we will be talking on this subject in times to come. Inshallah, I think there is enormous opportunities on both sides, and the only thing is, to put into action the will to do. Thank you very much. Azerbaijan, Pakistani friendship, dosti, zindabad. Thank you very much, my dear brother. We have a small presentation, just for some 10-15 minutes maximum. When I was visiting Brazilian country last summer, we discussed how Azerbaijan can participate in the plans of Mr. Prime Minister to modernize and to restore some historical sites in Pakistan. So since that time, our team was working on that and prepared, in agreement with the Pakistani side, the vision for that. And I think it will be interesting for everyone just to see what is being offered. And that also will be a small part, but important part of our Brazil relations. My, sub would not be complete, it will remain incomplete if I did not mention the experts team which my brother sent to Islamabad. Islamabad, as you all know, is a beautiful city, sitting on the foot of the mountains. But he has sent great experts who are doing a wonderful job in improving our landscape, landscaping, hard and soft, and greenery. Thank you very much. And I think this will add to the beauty of Islamabad. I don't think it will match the beauty of Baku, but with your team, it will start competing. Thank you very much. वज़ीर आज़म का दौरा अज़रबैजान, पाकिस्तान अज़रबैजान बिजनेस फोरम से खिताब कर रहे थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान देरीना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों की क़यादत के दरमियान तामीरी बातचीत हुई। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत को फ़रोग़ दिया जाएगा। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन ने दौरान तफ्तीश बड़े बिजनेसमैन, सियासतदानों और दीगर के नाम उगल दिए। मुलजिम ने बताया कि मुनशियात के ऑनलाइन रकम वालिद साजिद हसन के मैनेजर के अकाउंट में मंगवाता था। केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के घर से एक इसराइली बंदूक भी मिली है। बेदर्दी से कत्ल किया, अफसोस नहीं हुआ? I have nothing to do with that criminal Armagan case. We were friends. मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के घर से एक इसराइली बंदूक भी मिली। ABCC ने अरमगान के घर 10 फरवरी को छापा मारा था। घर से 3 हथियार मिले थे, जिनमें से एक राइफल इसराइली साख्ता है। करोड़ों के हथियारों के लाइसेंस भी अभी तक पेश नहीं किए जा सके। उधर मुलजिम साहिर हसन को जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया। अदालत ने 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी ज़राए ने बताया, मुलजिम साहिर हसन ने बड़े बिजनेसमैन, सियासतदानों और दीगर के नाम बताए। साहिर हसन ने बताया, मनशियात की ऑनलाइन रकम वालिद साजिद हसन के मैनेजर के अकाउंट में मंगवाता था। 5 साल से मॉडलिंग और 13 साल से वीट का नशा कर रहा हूँ। 2 साल से वीट फरोख्त कर रहा था। मनशियात का मुकम्मल बिजनेस स्नैपचैट पर था। कोरियर कंपनियों के जरिए करोड़ों की मनशियात मंगवाई।
हर हफ्ते 4 से 5 लाख रुपए अदा करता था। महीने में 2 मरतबा 1 किलो से जायद वीड मंगवाता था। 1 ग्राम वीड 10,000 रुपए में फरोख्त करता था। डिजिटल स्केल पर वीड का वजन करता था। मुल्जिम साहिर ने 12 से जायद क्लाइंट्स के नाम भी उगल दिए। आपने उनको मंशियात फरोख्त की है। I would never buy from Mustafa and I would never sell to Mustafa। इंसदादे मंशियात अदालत ने भी मरकजी मुल्जिम अरमगान के वारंट जारी कर दिए। अरमगान मुस्तफा कत्ल केस में पहले से गिरफ्तार है। मुल्जिम के खिलाफ 2019 में मनशियात स्मगलिंग के 2 मुकदमे दर्ज किए गए थे। मुल्जिम अरमगान ने कनाडा से मैरिजुआना मनशियात स्मगल कराई थी। 30 अप्रैल 2024 के बाद मुल्जिम अरमगान अदालत में पेश नहीं हुआ। अरमगान के 2 साथी अहमद गफ्फार और एहतशाम सुमरो इश्तिहारी हैं। बेदर्दी से कत्ल किया, अफसोस नहीं हुआ। एक मुकदमे में मकतूल मुस्तफा के भी वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। मकतूल मुस्तफा आमिर के खिलाफ 2024 में कोरंगी में मुकदमा दर्ज हुआ था। ANF के मुताबिक मुस्तफा ने कोरियर से मनशियात भिजवाने की कोशिश की थी। मुस्तफा आमिर ने कंपनी में नाम तैमूर लिखवा रखा था। मुल्जिम साहिर हसन 2 साल में 50 करोड़ से जायद मालियत का मनशियात मंगवा चुका था। मुल्जिम ने तफ्तीश में मजीद क्या बताया, हमारे नुमाइंदे नजीशा SSP SIU शोएब मेमन के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। देखिए, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के बाद और अरमगान की गिरफ्तारी में जो इंकशाफात हुए हैं, उस हवाले से जो तहकीकाती तफ्तीशी इदारे उनकी जानिब से काम किया जा रहा है और हर रोज़ाना इसमें न सिर्फ पेशरफ्त हो रही है बल्कि अहम इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं। इस वक्त मैं SSP SIU शोएब मेमन के साथ मौजूद हूँ, जिनको खुसूसी तौर पर नारकोटिक्स के खिलाफ टास्क दिया गया है। अरमगान और शिराज, इनकी गिरफ्तारी के बाद जो है जैसे हमने फर्दर इनको इंट्रोगेट किया, इसलिए एक बड़ा ड्रग नेटवर्क और ड्रग नेक्सस भी सामने आया। साहिर हसन, उसका एड्रेस मिला और पूरी डिटेल मिली कि कहाँ पर इसके पास स्टोर्ड हैं ड्रग्स। हमारी टीम गई है उनके घर जाकर, उन्होंने वहाँ से जो है एक पूरा बैग भरा हुआ था। ये चीज़ें वो परचेज करता था और आगे उसकी सेलिंग करता था। इंट्रोगेशन में उसने बाजिल से मैं खरीदता हूँ, ये 2 निजी कुरियर कंपनीज के जरिए जो है इस्लामाबाद से जो है वो कराची ट्रांसपोर्ट होती है। अभी तक ये 40-50 करोड़ रुपए की मंशियात जो है वो परचेज करके सेल आउट कर चुका है। कुछ पेमेंट्स कैश में आ रही हैं, कुछ पेमेंट्स जो है उसके वालिद के मैनेजर के अकाउंट में आ रही हैं। साजिद जो एक्टर है उनके मैनेजर के उनके मैनेजर के अकाउंट में जो है वो पेमेंट गिर रही है। क्या उनकी फर्दर इन्वॉल्वमेंट किस हद तक है, तो ये एंगल भी एक्सप्लोर करना है। इंतहाई तशवीशनाक बात है कि पाकिस्तान की 2 बड़ी कोरियर कंपनियों के जरिए बैरून मुल्क से किस तरह पाकिस्तान मंशियात लाई जाती है। पुलिस का ये कहना है कि इस हवाले से हर जाविये से जो है तहकीकात कर रहे हैं और जो टास्क SIU को दिया हुआ है उस पर ये तेजी से अमल पे रहे हैं। जी, मकतूल मुस्तफा आमिर की वालिदा ने कहा है कि उनका बेटा मनशियात फरोश नहीं था। आवाम से अपील है मुस्तफा के लिए आवाज उठाएं। वजिया आमिर का कहना था कि उनके बेटे के कातिल अरमगान के लिए फांसी बहुत छोटी सजा है, वो रिहा हो गया तो पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। मुस्तफा 23 साल का हुआ था, BBA फाइनल ईयर का स्टूडेंट। 3 महीने रह गए उसके एजुकेशन खत्म होने में, ग्रेजुएशन होने में। उसकी बहुत दोस्तियां थी, गाड़ी का उसको बहुत शौक था, जवान बच्चों वाली उसमें मस्ती थी। न्यू ईयर पे मुस्तफा इसके घर नहीं था। अपनी एक क्लास फेलो सारे बच्चों ने एक गेट टुगेदर रख के, एक उसका रूफटॉप पे अपार्टमेंट है, वो वहाँ पे था। आपको कहीं पे भी मुस्तफा और अरमगान की कोई तस्वीर भी नहीं मिलेगी। एज सच दे वर नॉट फ्रेंड्स। उस दिन वो वहाँ कैसे पहुंचा, ये उसके साथ ही चला गया। इसको तो मैं तीसरे दिन नॉमिनेट कर चुकी हुई थी। वो क्लेम करता है जी मैं नशे में था। और बराह रास्त लिए चलेंगे आपको हॉर्स एंड कैटल शो की इख्तितामी तकरीब इस वक्त जारी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब तिलावत कलाम पाक से इस महफिल का बाकायदगा आगाज किया जाएगा। जज़ाकल्लाह। आज का ये यादगार दिन, ये शानदार महफिल, ये जिंदा दिलों की बज़्म सिर्फ एक जश्न नहीं बल्कि हमारे कौमी विरसे बहादुरी का मुँह है। आज की रात हमारा ये हसीन इज्तिमा पाकिस्तान का रंगारंग सकाफ़त है। और अब शाह सवारों का एक दस्ता मौज़िज़ मेहमान ख़ुसूसी से आज की तकरीबात की शुरुआत की इजाज़त तलब करेगा।
तालियां हमारे शाह सवारों के लिए। A perfectly balanced mix. 2 खवातीन शाह सवार और 2 मर्द शाह सवार। हम आप सब मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, ख़ास तौर पे हमारी इवेंट की मेज़बान चीफ मिनिस्टर साहिबा और हमारे मेहमान ख़ुसूसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशाने इम्तियाज़ मिलिट्री का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने अपनी आमद से इस शानदार तकरीब को 4 क्या करोड़ चांद लगा दिए। हॉर्स एंड कैटल शो की बुनियाद 1964 यानी कि 1964 में रखी गई। इसका मकसद ज़राअत और खेती बाड़ी को फ़रोग़, किसानों की हौसला अफजाई और हमारी ज़िंदगियों में मवेशियों की अहमियत उजागर करना है। आज के दिन हम सब इकट्ठे हुए ताकि इस मिट्टी की ज़रखेज़ी के ज़ामिन दही ज़िंदगी के अहम सतून हमारे किसानों और हमारे मवेशियों की देखभाल करने वाले गल्लाबानों को खिराज तहसीन पेश कर सकें। आज की ये पुररौनक तकरीब हमारी सकाफत और रवायत की अक्कास है। आइए हम सब चल के आज की पहली परफॉर्मेंस की जानिब। पेश है एक ऐसा मुजाहिरा जो बहादुरी, चाबुक दस्ती और महारत की जिंदा मिसाल है। इस हैरत अंगेज परफॉर्मेंस में शाह सवारों की महारत, रफ्तार और दिलेरी को करीब से देखने का मौका मिलेगा। ये खेल सदियों पुरानी तहजीब के रंग रंगों से सजाए हमारे कल और आज की इलामत है। पेश खिदमत है मशल नेजाबाजी का शानदार मुजाहिरा। ओके कोई बात तो नहीं। No. ख्वातीन और हज़रात, कैसा लगा आपको टेंट पैकिंग का ये मुजाहिरा? एक जबरदस्त रवायत पंजाब की। वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। और आपने देखा कि हम क्यों प्राउड हैं इतने, क्योंकि एक जबरदस्त स्किल सेट चाहिए होता है, वो हॉर्स कंट्रोल, स्पीड, एक्यूरेसी, एजिलिटी। बिल्कुल बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। कमाल बात के जिस तरह खवातीन ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, आई थिंक सो इम्प्रेसिव। भाई पाकिस्तान को देखें हम कहां से कहां जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, वी नाउ हैव द फर्स्ट पाकिस्तान की सबसे पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर। दिस इज अ वेरी 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 बिग थिंग। पाकिस्तान इज मेकिंग स्ट्राइड्स इन द राइट डायरेक्शन एंड इन अ वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन। बिल्कुल। और एक और जो कि मैं वैसे चीफ मिनिस्टर साहिबा से वादा भी लेना चाहूंगा, मैडम, अब हमें अगली बार हॉर्स एंड कैटल शो के लिए इतना लंबा इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा। हमने बहुत लंबा इंतजार किया, अब आपने इसको कायम रखना है। मैडम जो वादा करती हैं उसे वक्त से पहले निभाती हैं जी। ये मैंने पर्सनली विटनेस किया है। और हमारे भाई जब मैं सही बात करी उस पे तो तालियां बनती है ना। थैंक यू। और हमारे शाह सवार आई थिंक इस तरफ आने को तैयार हैं। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।